So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 28 of the UGC NEET paper 2 mass communication and journalism. Here we will start with the questions number in the today's class 228, that is 228, right? Yes. So where the media text have, everybody will answer. The media text have, the options are material benefit, B borders, C representations, D obtrusive strategies. Media text have, everybody, very important and very simple questions. We read daily media text in the newspaper, we read daily in the media text in the televisions. So what about the media text basically it is? So media text have, everybody, yes, correct answer. Everybody has given the correct answer. This is what about the representations. Okay, so representation is how media text deal with and present gender, age, ethnicity, national or regional identity or social issues and events to an audience, right? How they present. It means how they present means how they represent. Okay. So this is what that media texts have the power to shape an audience knowledge and understanding about these important topics. आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर में ढालकर आपको न्यूज़पेपर के अंदर और टेलीविजन के अंदर प्रेजेंट करता है, हाउ मीडिया प्रेजेंट टेक्स्ट टू in front of you in the television, in the newspaper, how they framed, how they cropped, how they captioned, how they write, how they target, or how they branded, or how they composed. So this is what that the media takes. It is branded, written, lead, framed, cropped, captioned, branded, targeted, censored by their producers. This is what that representation or the presentations. Representations means that is reap of the presentations. Presentation को represent करना, that is what the representation that media takes have, either of the television or the newspaper that have the representation. They have the power to shape an audience knowledge. Okay, so this is what about the media text. It is all clear, everybody? The concept of the media text is, it is clear. Which one of the following is a social bookmarking site? कौन सा इनमें से सोशल बुक मार्किंग साइट है? एवरीबॉडी विल आंसर. फेसबुक, बी डिलीशियस, सी बैडू, डी व्हाट्सएप. सोशल बुक मार्किंग साइट इट इज, राइट? सोशल मीडिया नहीं, सोशल बुक मार्किंग साइट, राइट? दैट टू मैनेज और सेव द बुक मार्क. That is what about the bookmarking site, that is social bookmarking site. Everybody जल्दी से आंसर करेंगे. Yes, very good. Everybody is right here. Social bookmarking site की बात करेंगे तो social bookmarking site जो है वो कौन है? Delicious, right? Delicious, that is Delicious, a social bookmarking web service for storing, sharing, discovering web bookmarks. The site was founded. This is the site that del.icio.us. The site was founded by Joshua Scatter and the Peter Gadrzykov, Gadjokob, right? Gadjokov, okay, in the 2003 and acquired by the Yahoo. It was founded in the 2003 by these founders, Joshua and Peter, okay, and it was acquired by the Yahoo in the year 2005. With it, you can save the bookmark, you can manage the bookmark, you can share the pages in the centralized sources. It also brings a very powerful community aspect to the social bookmarking. So everybody, please remember this. Delicious, it is a social bookmarking site. Which Hindi film actress was originally named as Mehjabin? Everybody, कौन सी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस जिनकी ओरिजिनली नेम दैट महजाबिन? आई थिंक वाहिदा रहमान, मीना कुमारी, सब लोग डिफरेंट आंसर कर रहे हैं. सो ऑप्शंस आर मीना कुमारी विद द फिगर्स दैट यू विल सी. ठीक है, विद द फिगर्स यू विल सी मीना कुमारी, बी मधुबाला, सी नरगिस, डी गीता दत्ता. एवरीबॉडी फोटोज के साथ है. वेरी गुड, करेक्ट आंसर इट इज ए, मीना कुमारी. बहुत ही सुंदर, लाजवाब. आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड वनिका हैज आंसर्ड विद द कंफर्म
that is Meena Kumari. Okay, so Meena Kumari was originally named as Mahzabin. Meena Kumari was an Indian actress and poet who worked in the Hindi films. Meena Kumari was born with the name Mahzabin. Okay, Kumari was described by critics as a historically incomparable actress of the Hindi cinema. Sahib Bibi और गुलाम, पाकिजा, मेरे अपने, आरती, बाइजू बावरा, परिणीता, दिल आप अपना और प्रीत पराय, फुटपाथ, दिल एक मंदिर और काजल. ओके, ये सारे जो मूवी है बहुत इंपॉर्टेंट मूवीज, प्लीज ध्यान रखेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है. आइडेंटिफाई द फिल्म ऑफ द मेहजाबिन विच ओरिजिनली आइडेंटिफाई द identify the film of the Meena Kumari which originally named as Mehzabin. So in this way they can also ask you. This was the last movie. Pakiza was the last movie of the Meena Kumari, or after releasing of the Pakiza film वो हम लोगों के बीच नहीं रही. Will you remember that which in the film actress was originally named as Mehzabin? मीना कुमारी. ध्यान रखेंगे. ओके, और पहचानने के लिए आपको तो ये सारी चीजें पहचानना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर द मास मीडिया स्टूडेंट. यू शुड नो दैट हु वाज मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस और गीता दत्ता. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 231. द लार्जेस्ट मार्केट फॉर अमेरिकन television and the film contents as of now is, everybody, the largest market for American television and film contents as of now is Africa, Latin America, Europe and Australia. Very good. रचना, डिम्पल, अभिलाषा, किरुबा, वर्णिका, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल बिल्कुल ही सही है. वेरी गुड. So right answer it is C, Europe. Okay, चलिए. So it is clear to you to Tendril. आपका clear है? The largest market for the American television and film contents as of now is Europe. Okay, because the film produced in the United States accounted for nearly 69% of the all movies which is distributed in the European Union in 2019. आप समझ सकते हैं इसी से ये डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द फिल्म प्रोड्यूस्ड इन यूएसए accounted for nearly 69% of all the movies distributed in the European Union in the 2019, right? So we can think for this that the largest market for the American television and the film contents as of now is Europe. Okay, and compared to that, European movies had held a market share of the roughly 26%, right? जहां की अमेरिका के सबसे ज्यादा कंटेंट जो है वो यूरोप के अंदर चलता है. सो दिस इज व्हाट द बर्लिन इज रैपिडली बिकमिंग नोन एज द क्रिएटिव हब ऑफ द यूरोप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द फिल्म, वेयर its many historic buildings and relatively low production costs make it stand out, right? So this is what about the largest market for the American television and the film contents is Europe. Okay, that the data you have to remember, the 69% of the all movies which is distributed in the European Union as of the 2019. Okay, clear है? जल्दी से बताएंगे. So questions number 232. 232 number questions. Communication is also defined as symbolic production of. Please read it once. Communication is also defined as the symbolic production of conviction, tradition, morality and reality. Everybody. Communication is also defined as a symbolic production of what? हमने A B चलिए. Okay. Everybody answer. Yes. So answer it is D. D answer बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. Communication is also defined as the symbolic production of reality. Okay. So James Carey defines communication as, please note it down. Question can be whereby, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए हम क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं. What I want to ask you, so this is what that who shared a symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired and transformed. So answer will be, everybody जल्दी से बताएंगे. कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिफाइन करने वाले जो कि कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस वेयर बाय रियलिटी इज प्रोड्यूस्ड,
maintained, repaired and transformed, that is जेम्स कैरे. वेरी गुड. विलियम, इनका पूरा नाम क्या है? वेरी गुड. सो रियलिटी इज brought into the existence and is produced by the communication, ensure the construction, apprehension and the utilization of the symbolic forms. Okay, so this is what that he understand the communication as a symbolic production of reality. He worked many with symbolism और the symbolic से बहुत उन्होंने काम किया विलियम कैरे ने. देयर इज मोर वन क्वेश्चंस. एक और क्वेश्चन है जो हम आगे करेंगे जेम्स कैरे का. Okay, which is very much important question and that is also related with this. Okay, so आप याद रखेंगे that is James Carrot definition communications. Okay, he defines the communications that you have to remember. So produced, maintained, repaired and transformed. दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? क्वेश्चंस प्लीज नोट डाउन. ओके, क्वेश्चंस. Definition of communication. Okay, it is very much important. Identify the elements Carey mentioned in his definition of communication. So jaldi se likhenge elements. Everybody. Produced, maintained, repaired and transformed. Right? ये सारी चीजें जो है ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है. That is what the reality. Right? Reality is produced, reality is maintained, reality is repaired, reality is transformed. ये सारी चीजें हम आजकल कोई भी चीजें राइट जो सच्चाई होती है उसको हम क्या करते हैं? सच्चाई को प्रोड्यूस भी करते हैं, सच्चाई को हम मेंटेन करके भी रखते हैं. राइट, वी प्रोटेक्ट, राइट, वी प्रोटेक्ट आवर ट्रूथनेस और साथ ही साथ रियलिटी को हम रिपेयर भी करते हैं. राइट, आज की फिल्मों के अंदर किस तरीके से ट्रूथ की रिपेयरिंग हो रही, रियलिटी की रिपेयरिंग हो रही है, दैट यू नो. राइट, so reality is also transformed, reality is also repaired, reality is maintained, reality is produced. Right, so what they define the communication as symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired and transformed. Okay, याद रहेगा सभी को? एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे. इट विल बी रिमेंबर्ड वेरी इजी. ओके, चलिए, that's why I repeat it more and more so that you can listen and recall in during the exam. Okay, chaliye. In communication, when some topics are off limit to a person, it leads to dash barriers. Please read it twice. दो बार आप पढ़ेंगे इसे. In communication, when some topics, right, it is talking about topics when some topics are off limit to a person, means सीमा से बाहर चले जाना किसी टॉपिक का, सीमा से बाहर चले जाना किसी व्यक्ति का. सो दिस इज व्हाट इट लीड्स टू डैश बैरियर्स. इमोशनल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक एंड डी सोशल. एवरीबॉडी जल्दी से आंसर करेंगे. इन द कम्युनिकेशन व्हेन सम टॉपिक्स आर ऑफ लिमिट टू अ पर्सन, इट लीड्स टू डैश बैरियर्स. यस, ओके. सो कम्युनिकेशन के अंदर सी देखेंगे यहां पर इट्स नॉट डी, इट्स ए जो है राइट आंसर है. इमोशनल. सो इन कम्युनिकेशन व्हेन सम टॉपिक्स आर ऑफ लिमिट टू अ पर्सन, इट लीड्स टू इमोशनल बैरियर्स. सो सम पीपल मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, राइट, एंड सम टॉपिक्स मे बी कंप्लीटली ऑफ लिमिट और द टैबू. बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे हमारे समाज में, ठीक है, जो कि हम कंप्लीटली उसके लिए टैबू हो जाते हैं. राइट, दैट बिकम्स टैबू और द टैबू. राइट, टैबू और द डिफिकल्ट टॉपिक्स मे इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिक्स, रिलीजन, डिसएबिलिटीज, मेंटल और फिजिकल, सेक्सुअलिटी और द सेक्स, racism or any opinion that may be seen as unpopular. Okay, so this is what we are often taught to fear the words coming out of our own mouths, as in the phrase anything you can say, anything you say can and will be used against you. Right, it is very much truth sentence. Okay, that you read it, you will understand better that it is what it is saying actually about the emotional barriers in the communications. Right, it happens. Right, so overcoming this fear, it is difficult but necessary. The trick is to have full confidence in what you are saying. आप अपने आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप क्या कह रहे हैं एंड व्हाट योर क्वालिफिकेशन इन सेइंग इट. पीपल ऑफन पिक अप इट इनसिक्योरिटी. आपसे आपके फ्रेंड भी कभी कभी इनसिक्योर हो जाते होंगे आपके बोलने से. बोलते हैं ना, सच्ची बात कड़वी लगती है. राइट, दिस इज व्हाट दैट सम टॉपिक्स आर ऑफ लिमिट टू अ पर्सन, इट लीड्स टू इमोशनल बैरियर. एग्जैक्टली.
सो लड़ाई झगड़े क्यों होती है, वाई क्वारल और द लड़ाई झगड़े क्यों होती है, बिकॉज दिस इज व्हाट द सम टॉपिक्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड विथ द अदर्स, ठीक है, हम वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव ऑन लिमिट्स, ठीक है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट इट इज इमोशनल बैरियर, कि जो कि हमें मुंह बंद रखने पड़ते हैं उसके लिए, राइट। दिस इज व्हाट अबाउट द इमोशंस इट इज सेइंग दैट, ओके, टोटली इट इज अबाउट द इमोशंस, ओके। मे बी इमोशंस ऑफ द एंग्री, राइट, इमोशंस कुछ भी हो सकता है, एंग्री हो सकते हैं इमोशंस आपका, लाइक एनेक्शियसनेस हो सकता है, प्राइड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, राइट। इमोशंस कैन बी जेलस, कुछ भी इमोशंस हो सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट अबाउट, और आपको उसको इस चीज को लेकर क्या कर सकते हैं, दैट इज दैट it can stop you, right, it can stop you. So this is what about the some topics are there which are off limit to a person's, it leads to a emotional barrier, okay। Tendal, it is clear to you, jaldi se batayenge, it is all clear, is there any doubt that you want to ask in these questions? So it is clear to everybody. Now next, 234, in a ritual definition, communication is linked to, everybody jaldi se batayenge, ritual definitions, communication is linked to moral panic, B, connivance, sharing, and exploitation. In a ritual definition, communication is linked to, everybody, yes, that is it's about sharing, okay, that is it's about sharing, very much important. The ritual view of communication is a communication theory that proposed by the James W. Carey, okay, याद रखेंगे, James W. Carey that proposed the theory that is ritual view of communication, okay। और हमने क्या कैरो को लेकर बात किया था, एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे, we discussed about the Carey, everybody, yes, reality. So here that in the ritual definitions, the communication is linked to sharing, okay। So here the construction of symbolic reality that represent, maintains or adopts or the shares the belief of a society in the time, right, it is very much important that shares the belief of a society in time. So for an example it is given, right, so view reading a newspaper less as sending or gaining information and more as attending a mass, right, more as attending a mass, a situation in which nothing new is learned but in which a particular view of communication is portrayed and confirmed, right. So what it means about that, in the ritual view of communication, it is saying about the participation, right, the participation, it is more than, participation is much better, right, participation is much better, that it is more focusing on sharing, it is more focusing on participation, it is more focusing on sharing. In the ritual view of communication, it is about that how you share your belief of a society in time, right. So this is what about the ritual view of communication, that a particular view of the world, it is portrayed or the confirmed, like the news reading and writing, it is a ritual act, it is a ritual act, and moreover a dramatic one, okay. So this is what the reality it is about, the reality it is that it is sharing, reality it is that participations or maintains representation, adapts and share, okay. So this is what about the ritual view of communication by the James W. Carey, okay। चलिए इट्स फॉर यू क्वेश्चंस बट विल डिस्कस टुमारो, कल हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल, ठीक है, हमने इसको लेकर पढ़ा हुआ है एडवर्ड हॉल को लेकर, राइट। सो एडवर्ड टी हॉल आपको याद आ रहा होगा, राइट। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल डेवलप्ड द स्टडी ऑफ ग्राफिक्स, क्रोनेमिक्स एंड काइनेसिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स, एवरीबॉडी आंसर इट, क्या बात है, वेरी गुड।
इसका मतलब यह है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल डेवलप द स्टडी ऑफ प्रॉक्सिमिक्स, राइट, वेरी गुड। प्रॉक्सिमिक्स इसको लेकर डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ प्रॉक्सिमिक्स जो है वो डेवलप किया एडवर्ड टी हॉल ने, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एडवर्ड टी हॉल का हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, इन द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वी डिस्कस्ड, राइट? If you have remembered, then please tell us about the Edward T. Hall. That in the match of the following, we read the books of the Edward T. Hall. Very much important book it was, right? So major contribution of the Edward T. Hall was in the non-verbal communications. Okay. Anybody has remembered about the Edward T. Hall books, then they can write it in the comment box. Otherwise, we'll repeat it again in the upcoming classes. Yes, that is Beyond Culture. Very good. बहुत ही सुंदर. Very good, Rachna. That is Beyond Culture we discussed in the match of the following. It was books. Okay. Very good. This was very much important, right? By the Edward T. Hall. And another important that Edward T. Hall developed the study of proxemics. And proxemics is related with what? Everybody, that is time or distance. जल्दी से बताएंगे. Time or distance. Yes, very good. It is related with the distance. Okay. चलिए, सो यह सारे क्वेश्चंस थे और हमने जो डिस्कस किया, विल डिस्कस इट मोर अबाउट द 218 नंबर क्वेश्चंस विल डिटेल. ओके, डिटेल में 218 नंबर क्वेश्चंस को हम कल भी डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समराइजेशन पार्ट. व्हाट वी हैव लर्न, मीडिया टेक्स्ट. वेरी गुड. मीडिया टेक्स्ट को लेकर हमने डिस्कस किया कि मीडिया टेक्स्ट क्या है, बताते भी चलेंगे. यस, रिप्रेजेंटेशंस. वेरी गुड, साथ साथ में बताते हुए भी चलेंगे. यस, डिलीशियस के बारे में हमने बात किया. डिलीशियस क्या है एवरीबॉडी? दैट इज ए सोशल बुक मार्किंग साइट. वेरी गुड, सोशल बुक मार्किंग साइट. ओके, स्लोली स्लोली. थर्ड, दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द मीना कुमारी. दैट वाज द ओरिजिनल नेम. इट इज, यस, वेरी गुड, मेहजाबिन. ओके, एंड हर मूवीज ऑल्सो वी हैव टॉक्ड. ओके, नाउ एडवर्ड टी हॉल हमने डिस्कस किया. Very good. That we related with the study of proxemics and also the beyond the. Number 5 हमने डिस्कस किया, largest market for the America. Yes, largest market of the America, American film or the television. Okay, American film or television. Okay, that is Europe. Very good. हमने James W. Carey. Okay, we discussed that is symbolic production of reality. Very good, symbolic production of reality. ये सारी चीजें याद रखेंगे. दिस इज द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट. यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. ओके, आपको मैच करना पड़ेगा. symbolic production of reality. Yes, and also the 4 elements that discussed in the discussed by the James W. Carey. Very good, important. That is produced. Yes, very good. Produced, maintained, repaired and transformed. Very much important. ये 4 चीजें याद रखिएगा. Produced, that is reality is produced, reality is maintained, reality is repaired and reality is transformed. Okay, this is about the reality, the symbolic production of reality. Next, that emotional barrier we have talked, right? Emotional barrier में हमने क्या डिस्कस किया था everybody? जल्दी से बताएंगे. What we had discussed in the emotional barrier of the communication. Yes, some topics are off the limit to a person, right? That is of the emotional barrier of the communications. Very good. Some topics are off limit to a person, right? कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारी सीमा से बाहर हो जाते हैं और उसके लिए हम इमोशनल हो जाते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं, राइट? और हम बेचैन हो जाते हैं. दिस इज व्हाट अबाउट द सम टॉपिक्स आर ऑफ लिमिट टू अ. नेक्स्ट अबाउट इट इज, यस, शेयरिंग. शेयरिंग को लेकर हमने डिस्कस किया था. व्हाट इट वाज क्वेश्चंस एवरीबॉडी? व्हाट इट वाज शेयरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस? इट वाज कम्युनिकेशंस. यस, रिचुअल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? यस, ritual view of communication, which by the James W. Carey in the definition, that is communication, it is linked with, yes, sharing. Okay, very good.
Ritual view of communication, ritual definitions में, right? That communication is linked with the sharing that you have to know. वेरी गुड. और एडवर्ड टी हॉल को लेकर हमने डिस्कस किया, दैट इज बियॉन्ड द कल्चर एंड द प्रॉक्सिमिक्स. वेरी गुड. So this was all about approx 10 topics that we had discussed in the today's classes, which was very much important. So let's one more discussion about, जल्दी से बताएंगे मीना कुमारी की मूवीज. एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे मीना कुमारी की मूवीज को भी लेकर डिस्कस कर लेते हैं. इफ यू हैव रिटन देन यस. पाकीजा, वेरी गुड. साहेब बीबी और गुलाम, वेरी गुड. नंबर सी, मेरे अपने, यस, वेरी गुड. बाइजू बावरा, बाइजू कह रहे हैं, बाइजू बावरा. दिल अपना और प्रीत पराय, वेरी गुड, क्या बात है. दिल अपना और प्रीत पराय, यस टेंडल, वेरी गुड, यू हैव नोटेड वेल. एफ दैट इज फुटपाथ, बहुत ही सुंदर. और दिल एक मंदिर और काचल, ओके, very much important. Last movie it was Pakiza. Very good, बहुत ही सुंदर. So this was all about that we had discussed about the Meena Kumari, which originally named was Mahzabin. Okay, चलिए, बहुत ही सुंदर. So this was the last questions of the today's. Okay, we'll discuss it more in the upcoming classes. So thank you to everybody. Thank you so much. If there is any doubt in any of the questions you want to repeat it again, then please ask. किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चंस में है तो पूछ सकते हैं. वी कैन रिपीट इट अगेन. ओके, सो देयर इज नो टू बी वरी. चलिए, ऑल क्लियर. थैंक यू टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.